हालेलुया हालेलुया। विश्वनाथ धन्य ने प्रेमी नाम आखे सलाम प्रेमी सलाम जय सलाम। आज सवारना कोडाक भाव सुने कुसमा हास कहा पाणी वरसूला हाता का प्रभु नाला धन्यवाद हुयो। प्रिय मित्रों, खास पृथ्वीवर मनुष्यने માટે પરમેશ્વરની સુવિધા दिएल हा, पण देवना वचन हे ते सांग का या धरतीवर गीत शास्त्र त्यांना 12 अध्याय आणि त्याने पहिली कलम आपले वाचू। हे यहोवा बचाव कर धार्मिक माणूस जाणू घट्टा हा धरतीवर प्रिय अनुभव से हाँ कलम पूरी करूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सांगा का बचाव कर, कारण का ये धरतीवर हा प्रिय अनुभव से धार्मिक माणसा खुट्टा जाता, धार्मिक माणसा वसा होत जाता आणि प्रिय अनुभव से जन समाज मासून विश्वासू माणसा घटत जाता। हालेलुया बोला विश्वासू कोणाक भाव से विश्वासू हास विश्वासू हास। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाव से जन समाज मसून विश्वासू माणूस जाणू घट्टा जहा कोई व्यक्तीवर आपले विश्वास कर जन, पण आता विश्वास कोला जिसा रहना नहीं जिसा हो गया का नहीं। हालेलुया हालेलुया। विश्वासू हाँ प्रिय भाव से विश्वासू तो हाँ गणना तेना 12 अध्याय ने 7મી कलम सांगा का પોતાના ઘરમાં પહેલા વિશ્વાસુ મૂસા પોતાના ઘરમાં વિશ્વાસુ હતા। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाव से विश्वास विषय मैं વધારે बोलना हूँ, पण आज विश्वासू विषय बोल रहा हूँ। विश्वासू प्रिय भाव से पहला तो પોતાના ઘરમાં विश्वासू कठो विश्वासू वाई बोलता हूँ कोणाक भास बिने પોતાના ઘરમાં विश्वासू हास પોતાને ઘરમાં વિશ્વાસુ पति पत्नी एक दूसरा हारी विश्वास थी संबंध बांधेला हा, एक दूसऱ्यावर आपले विश्वास के जदवो हाँ आपले समाज में आदिवासी समाज में पोसी हेरूला पोसा जहा आणि त्यार पसी तेला तपास करले हेरो आणि पोसापोसी नक्की करता हा आणि एक दूसरावर विश्वास उत्पन्न हुयो का यो भाई जो हा यो हा तो मला पोसील आणि माने सेवा चाकरी करील। प्रिय भाव से गरुड जाणू पक्षी हा गरुड पक्षी आपले प्रिय भाव विस्तार माने हा, पण गरुड पक्षी जाणू हा ते जे नर गरुड आणि मादा गरुड प्रिय भाव से गरुड विषय में अभ्यास करता हूँ त्यारे गरुड जाणू ते एक ते नर गरुडला मादा जी गरुड हा ये प्रिय भाव से तेना विश्वासला तपास कर। हालेलुया हालेलुया। तो एक लाकूड जानो टोक मा लीले है पाय मा लीले है आणि वर जायनी सोडी दे है, तो जो नर गरुड हा तो पकड़े सावर तेला झेली ले है आणि पासा जी वर ली जा। तो प्रिय भाव ऐसा करता घणी हाथ प्रिय भाव से तपास यो गरुड करह मादा गरुड नर जो गरुड हा तेने तपास करह त्यार पसी माता बन। प्रिय भाव से आजकल तो तिसा नहीं प्रिय भाव से हाँ तो आजकल ने जुआन पोसे कोई खबर नहीं आने प्रिय भाव से विश्वास कर लीजिए नहीं जाता रहते पण प्रिय भाव से हाँ वचन सांगा का हाँ मूसा पोताना घर में विश्वासू होता घर ने परिवार हारी आपले पहले विश्वासू रहुला। आज जुआनो हाथ आपले माता पिता हारी विश्वासू रहुला। हालेलुया हालेलुया। विश्वासू रहीने एक दूसरा ने गोट जे हा तो एक दूसराला सांगला शेअर करला। मूसा प्रिय भाव से पोताना घर में विश्वासू होता आणि प्रिय भाव से विश्वासू आपला देव पण विश्वासू हा। पुन्हा नियम त्यांना 7 मध्ये आणि 9મી कलम ते सांगा आपला देव विश्वासू हा, आपला देव विश्वासू हा। એટલા માટે આપાવર પ્રેમ કરીને તેને આશીર્વાદ આપલા દીધા સુખી રાખા। આપલા દેવ વિશ્વાસુ હા, आपला देव विश्वासू हा। हालेलुया हालेलुया। प्रिय भाषा आपला देव अन्याय कर नहीं, तो अल्फा ने ओमेगा आदि ने अंत हा। आपला प्रभु बदलाज नहीं जिसान तिसा जहा मानुस बदलाज जहा
प्रिय भावसो काय वखत आपले जे व्यक्तीवर विश्वास करजन तो जेवर भरोसा करजन तोच व्यक्ती भरोसा तोडी टाकी दे. पण प्रिय भावसो आपला देव विश्वासू हा. हालेलुया हालेलुया. कोणाक भावसो विश्वास करतास आपला देव विश्वासू हा ना. प्रिय भावसो आपला देव विश्वासू हा तो प्रिय भावसो आणि वचन सांग पहिलं समेल तेना 20 अध्यायने 35મી कलम सांग का प्रिय भावसो याजक पण विश्वासू એટલે કે દેવના સેવક પણ વિશ્વાસુ દેવને હારી રહુલા. દેવના સેવકે દેવને હારી વિશ્વાસુ રહુલા ત્યારે પરમેશ્વર તેના વિશ્વાસના પ્રમાણમાં કામ કરેલ. प्रिय भावसो याकूबना पत्रमा ए रीते सांग का प्रिय भावसो न्याय माणसने प्रार्थना परिणामे सार्थक थाय छे. देवने हारी विश्वासू हवा तो प्रिय भावसो आपली प्रार्थना सार्थक होईल. प्रिय भावसो देवने हारी आपले विश्वासू ने तो आपली प्रार्थना सार्थक नहीं हुयो. એટલે का प्रिय भावसो काम नहीं करायचा. हालेलुया हालेलुया. कोणाक भावसो विश्वास करतास का आपली प्रार्थना में काम हुई रहना हुई रहना. थोड़े से प्रार्थना में हुई रहना थोड़े से प्रार्थना में नहीं. हाथ वसा उभा होता है. प्रिय भावसो आपला देव विश्वासू देव हा. हालेलुया हालेलुया. नेहम्या तेना 9 अध्याय અને તેની 8મી કલમ વાંચો આપણે. नेहम्या 9 अध्याय 8મી કલમ બહુ ઝડપથી કાઢજા. તેનું અંતકરણ તને તારા પ્રત્યે વિશ્વાસુ માલુમ પડ્યું. કનાનીઓ, હિત્તીઓ, અમરીઓ, પરિજીઓ, યબૂસીઓ અને ગિર્ગાશીઓનો દેશ તેના સંતાનને આપવાનો કરાર તે તેની સાથે કર્યો અને તું ન્યાયી હોવાથી તે તારું વચન પાળ્યું છે. हालेलुया. प्रिय भावसो इब्राहिमना जे अंतकरण प्रभु प्रत्ये विश्वासू હતા. हालेलुया. इब्राहिमना अंतकरण प्रभु प्रत्ये विश्वासू હતા. नेहम्याना पुस्तक ए रीते सांग. प्रिय भावसो आपला अंतकरण जे प्रभु प्रत्ये विश्वासू का केम. प्रिय भावसो आपले विश्वासू दाखवजन. लोक पण सांगता ती बेन विश्वासू पण प्रिय भावसो अंदर थी अंतकरण थी विश्वासू का केम. अंतकरण में प्रभु प्रत्येना प्रेम का नहीं. प्रभु प्रत्ये विश्वासू का नहीं. प्रभु प्रत्ये विश्वासू हवा तो प्रिय भावसो प्रभुना नियम जे ते पाडूला पड़े. देवना नियम पाडूला पड़े. हालेलुया हालेलुया. હવે પ્રિય ભાવસો કોણાક ભાવસો ને સાહસ का સવારના ઉઠીને દેવની મુલાકાત લેતા પ્રાર્થના કરતા ઉઠત ખોટે બાકીના રવિવારે જ પ્રાર્થના કરતા. હાલેલુયા હાલેલુયા. પ્રિય ભાવસો પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ ઇબ્રાહિમ પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ હતા. એટલા માટે પરમેશ્વર તેલા सांगे का विश्वासना पिता विश्वासना पिता. हालेलुया हालेलुया. ઈસાક વિશ્વાસના પિતા. પ્રિય ભાવસો તેલા सांगवामाना એક લાંબા સમય સુધી તેલા બાળકની હતા છતાં પણ દેવની વાટ હેર હતા. સારા ઘબરની અને પ્રિય ભાવસો તીને વિશ્વાસ છોડા અને હાગારલા તેને પાછું લઈને પણ પ્રિય ભાવસો ઇબ્રાહિમના વિશ્વાસ હતા. પરમેશ્વરના દર્શન તેલા હતા તેવર તેના વિશ્વાસ પૂરા હતા. પ્રિય મિત્રો इब्राहिमला परमेश्वरने सांगा तुना एक ना एक कोसा मला लई दे आणि त्याला अर्पण कर बली चढव. तो प्रिय भावसो ईसाकला मान के प्रिय भावसो 13-14 वर्षना पोसा ईसाक प्रिय भावसो बली चढून माटे लिगे आणि प्रिय भावसो ते हात पाय बांधीने प्रिय भावसो ज्यां सुधी वेदीवर थावना ईसाक हेरे कर. पण प्रिय भावसो सुराव गावना त्यारे परमेश्वरने हाक दिदा हे इब्राहिम. हालेलुया हालेलुया. એટલા માટે પરમેશ્વર તરફ તેના ધ્યાન હતા. માલા કાંઈ બી પરમેશ્વરને તો પ્રભુના નિયમમાં ચાલવાને માટે કોઈ બી વિઘ્ન તરીમાં ખમીન जी प्रभु मागेल ते दिन. हालेलुया हालेलुया. એટલા માટે પરમેશ્વરને પ્રિય પ્રત્યે ઇબ્રાહિમ વિશ્વાસુ હતા. કાંઈ ભાવસ બિનિસ પ્રિય ભાવસ દેવ પ્રત્યે વિશ્વાસ નહીં. અત્યારે દેવ પ્રત્યે વિશ્વાસ નહીં.
प्रिय नभावशिष आपले देवना सेवक सांगा समयसर हाजर होई जावला सभामा, पण प्रिय नभावशिष माणूस हाजर नाही हुयो. हा तुझा करते है अख्खा जी आऊं हा कोणाक भावसे नाही ऐसे अख्खा हा तुझा कर देता हा पण येत नाही. प्रिय नभावशिष आपले ठोक विश्वासू हा आपले देव प्रत्ये आपले सांगजे होन पण वाय ठगी दीजिए. कोडेक भाव जोडीला खबर होती का शनिवारी सांजना सभा हा अब्दा लोक ठगनास ना એ બહોર બિસ્તા એ પ્રિય માનવ એટલા માટે હાલેલુયા आपले प्रिय नभावशिष विश्वासला धरी रोला ना आपले हात उचा करजोन पण प्रिय नभावशिष बहु ग्राही हाथ तुझ्या करीन फसुला ते आपले लगन में सांगते ना गाना लावते हैं बेनोल गाना लावते हैं सांगते हैं का पेंडा खाए नहीं ठगाएगी वो ना पेंडा जो खाए नहीं ठगाजी गई नहीं तो माँ येती नहीं. प्रिय विश्वास जी हाँ प्रिय नभावशिष आपले सांगजन विश्वासू पण आपले विश्वासू जीवन जीवजहन का काय प्रिय नभावशिष अग्राहा. हालेलुया डोकीवर टुवाल टाका એટલે लोक हेरता ही बेन विश्वासू हा पण अंदरથી विश्वासू हा का नाही. प्रिय नभावशिष सफेद शर्ट पवना काळा पॅन्ट पवना એટલે लोक हेरता यो सेवक हवा यो विश्वासू माणूस कारण का डिझाइन वगैरना कपडा पवना आणि साधा सिंपल सेवक हा यो तो भारी पण प्रिय नभावशिष अंदरून देव प्रत्ये विश्वासू हा का नाही ती प्रिय नभावशिष हेरुला हा. हालेलुया दुसरा तो प्रिय नभावशिष हा नाही में तेना 13 અને 13મી कलम हा नाही में 13 वाची विचारी नहीं चाल आपले बહુ ઝડપથી તે ભંડારો ઉપર મેં ભંડારો નિમ્યા ભંડારીઓ નિમ્યા તેવો આ છે સેલેમિયા યાજક સાદોક સિટનીસ તથા લેવીઓના પદાયા અને તેઓથી ઉતરતો માતાન્યાના પુત્ર ઝાકુકનો પુત્ર હાનાન હતો. કેમ કે તેઓ વિશ્વાસુ ગણાતા હતા. પોતાના ભાઈઓને વેચી આપવું એ તેઓનું કામ હતું. હાલેલુયા. અઠો પ્રિય નભાવशिष खजानजी અને હા તે મંત્રી खजानजी है અને પ્રિય નભાવशिष હા જે અન્ન પૈસાના જે ભંડાર સંભાળનાર છી પ્રિય નભાવशिष હા તે ગણતરી કરવામાં હા તેઓ પ્રિય નભાવशिष હા વિશ્વાસુ ગણાજત. हालेलुया काय बोलता हालेलुया तेला जी साचवला दिज तेमा बोज विश्वासू होता ते समय ते जमानामा प्रिय नभावशिष घर भले गरीबाई हुई का कोई बिन हवा पण प्रिय नभावशिष देवना भंडार साचूने माटे प्रिय नभावशिष तेवो विश्वासू होता. हालेलुया विश्वासू गणाज होता. प्रिय नभावशिष पैसा साचूने माटे विश्वासू होता आणि प्रिय नभावशिष अनाज साचवने માટે વિશ્વાસુ હતા અને તેઓ વિશ્વાસુ ગણાજે તે બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યા. હાલેલુયા. તો પ્રિય નભાવशिष એ રીતે બાઇબલમાં લખેલા હા અને પ્રિય નભાવशिष વિશ્વાસુ માણસો હતા. ખજાનજી મંત્રી વિશ્વાસુ પ્રિય નભાવशिष પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સમયમાં યહૂદા ઇસ્કારિયત ખજાનજી હતા पण प्रिय नभावशिष अविश्वासू मालूम पड़ना किसाक मालूम पड़ना अविश्वासू चोरी करनार. हालेलुया ठेली उचलनार व्यक्ति प्रिय नभावशिष प्रभु यीशु ख्रिस्तला की दिना पैसा बुहू गे प्रिय नभावशिष पैसाला हेरता प्रिय नभावशिष एना मन वधारे अजून काही भेगा करू इसा हुई गे आणि प्रभु यीशु ख्रिस्तला पण की दिना. प्रिय नभावशिष विश्वासू रहना का नहीं रहना. हालेलुया એટલા માટે પેલા કોરિન્થી એના 4થો અધ્યાય અને બીજી કલમ એ રીતે सांगा का દરેક कारभारीને વિશ્વાસુ રહુલા.
हालेलुया. जे कारभार आपल्याला सोपेल हा तेमा विश्वास राहुला. प्रिय न भावसुस हा जल्दी जल्दी माँ को झड़प दीजिए. हाँ हालेलुया. दरेक कारभारीने विश्वासू रहुला ये जरूर ना. प्रिय न भावसुस आज આગલી હરોળમાં બિસેલ હાથીએ દેવના વચનના કારભારી ભંડારી. हालेलुया. तो देवना वचनना भंडार ह्याला परमेश्वरने सोपेला हा, मला पण सोपेला हा. तो देवना वचनना भंडार ज्याला सोपेला हा त्यांनी विश्वासू राहुला असं सांगा. तेच रीते धन दौलत ज्याला सोपेला हा त्यांनी पण विश्वासू राहुला असं सांगा. हालेलुया. हालेलुया. विश्वासू बोला. विश्वासू बेनो तेवने बोलने से विश्वासू आई बोलते हैं. हालेलुया. ने पतीना खिस्साમાં जो पैसा धवता धवता काढसे तर दाखव जाता दपाड़ी नको टाकसे. आज वो लड़ाई हुई है पैसा साठी चोरी लेनी ब दपाड़ी टाकणे. प्रियने वासूस पती पत्नीला तो एक शरीर परमेश्वरने बनवल्याचं सांगेला. तेना प्रियने वास आज आजना समयમાં तो प्रियने वासूस आजना समयમાં ये रीते चाली रहना. पण मोहरोने समयમાં प्रियने वासूस बोज विश्वास एक दुसराने हारी रहता. प्रियने वासूस देवना वचन सांगा का दरेक कारभारीने विश्वासू राहुला. हालेलुया. हालेलुया. बोलो प्रभु यीशु मसीह के. हाँ लूक ने लिखली सुवार्ता 16 અને 11. हाँ ઝડપથી વાંચીને ચાલો આજે. માટે માટે જો અન્યાયી દ્રવ્ય સંબંધિત અને વિશ્વાસુ થયા ન હો તો ખરું દ્રવ્ય તમને કોણ સોંપશે. हालेलुया. ये धरतीना अन्यायी द्रव्य हा तेमा जो तू विश्वासू निरस तो प्रिय न भावसो खरा धन जे स्वर्गना हती तुला कोण सोपील. प्रिय न भावसो ये धरतीना धन मा जो विश्वासू हुआ तो खरा धन स्वर्ग मा हती परमेश्वर सोपील. प्रिय न भावसो आपला परमेश्वर घणा व्यक्ती ए रीते सांगता साहेब जानो पहिलामा पोका पैसादार हता धनवान हता पण आज मानेपासून काही राहणार नाही. कहा कारण का परमेश्वरने जी धन देना तेना व्यवस्था तेनी वहिवट तेना करता तुला आवडणार नाही એટલા માટે तू आज परिस्थितीतून नबळी होत काय. हालेलुया. हालेलुया. बोले प्रभु यीशु मसीह के. એટલે પ્રિય ભાવસુસ जी दुनियाना धन हा तेमा जो आपले विश्वासू नाही तो प्रिय भावसुस खरा धन परमेश्वर ना हा ती आपल्याला कधो सपील नाही सपणार. प्रिय भावसुस खरा धन तो देवना वचन हा. हालेलुया. हालेलुया. એટલા માટે પ્રિય ભાવસુસ 16 અને 12 વાંચું. હા અને જો તમે પરાયા દ્રવ્યમાં વિશ્વાસુ થયા ન હો તો જે તમારું પોતાનું તે તમને કોણ સોંપશે. હાલેલુયા. પરાયા દ્રવ્ય એટલે કે દુસરાના ધનમાં તમે જો વિશ્વાસુ નહીં હાસ તો પોતાના કોણ तुला સોપીલ. પ્રિય ભાવસુસ જે ધન હા એમાં વિશ્વાસ રહુલા सांगा. पैसा टकाમાં विश्वास રહુલા सांगा. आज घणा प्रिय भावसुस हा लोको विश्वासू नाही हात धनमा. घणा व्यक्ती सांगता हा यो मंत्री यो ईशा यो हा तो मामलतदार ईशा यो खाय जा तो खाय जा तो खाय जा तो खाय जा तेला तो धरी देन तेला तो धर देशना जो राजकारण में पण ईशा चाले राहणार. प्रिय भावसुस कारण का विश्वास एक दुसऱ्यावर हम लोक ना उठवायची ऐकतास ना. देशनी गोट कोणाक ऐकतास. हालेलुया. जात जातना मंत्री हात आणि प्रिय भावसुस देशला किसाक चालवता ते आपल्या आयक जा. એટલા માટે પરમેશ્વર પ્રિય ભાવસુસ જેલા સ્વપ્ન હા તેની તે કામમાં વિશ્વાસ રહુલા. हालेलुया. भाईओ तुम्हाला पत्नी आणि बाळक तुम्हाला सोपेल आहात याला सांभाळूला वचन सांग. जो પોતાના પરિવારला
बराबर नहीं चलावो तो वचन सांगा का तो अविश्वासू करता भूंडा. हालेलुया, हालेलुया. પોતાના પરિવારला બરાબર રીતે નહીં ચાલાવો તો તેલા सांगा અવિશ્વાસુ કરતા ભૂંડા. ઈસા બાઇબલમાં લખેલા. એટલા માટે દરેક ક્ષેત્રમાં આપણા જે કામ દિયેલા હા તેમાં વિશ્વાસુ. हालेलुया, हालेलुया. बोलो प्रभु यीशु मसीह के. समझी रहा ना प्रिय भाषा बाइबल ये रीते सांगा का विश्वासू रोला. ત્યાર પછી ખબર આપનાર કોઈ પણ ખબર आपल्या देवला हवा तो विश्वास योग्य रहीने खबर देवला. तुम्हाला सांगी दवण आठवून तठ जायने सांगी दीजो तो खरांच सांगूला खरांच सांगूला. काय खोटा सांगी देवला गोट वधवीने सांगूला नाही. केव गेस हास खरांच सांगूला सांगा. हालेलुया. जी सांगा हा तीच सांगूला दुसरा वदारी ना नाही. नीतिवचन 13:17. આરોગ્ય આરોગ્ય રૂપ છે. हालेलुया. दुष्ट खेप्यो એટલે का दुष्ट व्यक्ति खबर देनार प्रिय महसूस करना काय हुई हो हानि में पड़े से. हालेलुया, हालेलुया. दुष्ट खेप्या એટલે का प्रिय महसूस जो खबर देनार व्यक्ति प्रिय महसूस हाँ ते झूठी खबर देनार व्यक्ति जी हाती नहीं सांगा पण दुसरा सांगा हो. आज मीडिया प्रिय भावसूस हेरजन आपले जी हाती नहीं सांगा ने हाती सांगी रहना. हालेलुया, हालेलुया. आज प्रिय भावसूस माणसा जितान तरी त्याला मरेल दाखवજો ना. झगडा हुयो प्रिय भावसूस नानी नानी बाबत हा प्रिय भावसूस जी नहीं ती हा देश में फैलावी रहणार એને લીધે મોટા ઝઘડા દેશમાં ચાલે. પ્રિય ભાવसूस એટલા માટે प्रिय भावसूस त्याला दुष्ट खेपिया सांगवा माना. किशा हालेलुया. देवना सेवको साला पनि लागू पडो कारण का जी वचन में हा तीनी प्रकट करो અને ને હાથી सांगी रहना. प्रिय भावसूस એટલા માટે ઘણા સેવકો પ્રિય ભાવसूस प्रार्थना कर देता लय 10,000 लय 5,000 थोड़ाक नहीं प्रार्थना हुई हो. प्रिय भावसूस आज एक भाई मला हा प्रिय भावसूस सांगता थोडाक रुपये दिदात पण माने जीवन में शांति. प्रिय भावसूस सेवको पण सारा समाचार दाखवणार व्यक्ति बनवला जेथी કરીને લોકો સાલા આરોગ્ય રૂપ બની છે. हालेलुया, हालेलुया. देवना सेवको पण खेपिया हात आपले प्रिय भावसूस खबर देणार. 25 अध्याय नीतिवचन 13 कलम. हाँ झड़पथी झड़पथी 25:13. અસલના વાતમાં હિમની શીતળતા જેવી લાગે છે તેવો જ વિશ્વાસુ એલચી તેના મોકલનારાઓને લાગે છે. हालेलुया. विश्वासू प्रिय भावसूस जे रीते हा प्रिय भावसूस देव वचन सांग का झाकड पड वस पड आणि कोणाक मस्त सवार में आपले हेरजन प्रिय भावसूस तेवर चालूला मन हुई ऐसी हा प्रिय भावसूस झाकड पड ती दिस तेज रीते प्रिय भावसूस हा ते विश्वास थी खबर देनार व्यक्ति हा. हालेलुया, हालेलुया. विश्वासू माणूस खबर देनार व्यक्ति प्रिय भावसूस एक हृदयला अंदर थी आनंद देनार व्यक्ति. हालेलुया, हालेलुया. એટલે ખબર દેનાર પ્રિય ભાવसूस एक साची खबर दे तो हृदयला आनंद है. हालेलुया. कोडाक भावसूस तुम्ही पण खबर देतास का नाही. प्रभु येशू ख्रिस्त जी काम कर रहना तेनी खबर दे दुसराला साची खबर दे. हालेलुया, हालेलुया. 11 अध्याय અને 13 कलम. झड़पथी नीति वचन 11:13. झड़पथी जाજો.
हालेलुया. चाडी करणार माणूस अटली गो तठ तटली गो तठ तटली गो तठ चाडी करणार व्यक्ती काय कर दपेल गोटला खुली कर दे. प्रिय भाष से जी गोट दपाड़ी टाका तो समझ ऐसे रहो. पण चाडी करणार व्यक्ती प्रिय भाष त्याला जो खबर लगी गई तो हा प्रिय एक बेन वाईन बारीक गोट हा पण 10 बेन साला सांगे दाखवा. भाई पण अमुक चाडी करणार व्यक्ती राहता हा चुगली खोर. हा प्रिय भाष ती एक साहेब सांगा ऐसा का डो फूके जो ये घर में रहता है बेस पण कान फूके ही बेट એટલે કાન ફૂકે વ્યક્તિ રહો તો 10 જણા સાલા सांगे दाखवा. हालेलुया. तो ये व्यक्ती गुप्त वात हवी त्याला प्रेम भाव उघाडी कर दे. पण हा विश्वासू म्हणणा माणूस हा ऐसी गोट जे हा ती प्रेम भाव दाबी राख दुसऱ्याला नाही सांग जाम दे नाही ही पती जाम दे सामान्य बात आहे. तो विश्वासू हा प्रिय भाव त्याने हृदय में घाय तो पडो पण दुसऱ्याला नाही सांगी दाखव काय वांधा नाही जाम दे. हालेलुया. हालेलुया. त्याला मनमा विचार हे काही गोट जेव्हा दुसऱ्याला सांगेन तो इसा होईल लांबी होईल आणि फिर इन माझ पासून येईल. त्याने दे तो माणूस गोटला दपाडी टाका. पण प्रिय भावस जो माणूस चुगलीखोर हा चाडी करणार व्यक्ती हा तो दपेल गोटला उघाट कर दे आणि कजे कजे फैलाव दे. हालेलुया. 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 कोणाक भावस विने साहस तुम्ही का जी गोट कुणीही लाव दाखव पण तठच भूली जाता असेसा भूली जाता. एक जन मोठे कानवा राजा होता सुपल काने मोठे कानवा राजा होता आणि एक धावी डोकी टाकूला गे धावी ला डोकी टाकता हेरना तो मोठला कानवा अवे राजा ये ते वॉर्निंग दे तू वाढ कापी धाव पण माना कान मोठला हात दुसरा कुणाला सांगशी नको कुणाला ज्यानं सांगशी नको. प्रिय भावशीस याला तो सांगूला मन हुए पण राजाने सांगेल ती दुसऱ्याला सांगूला मन हुए पण राजाने सांगेल ते आठवी जा झाडीला गे एक खुटुकला जाने सांगो राजा जो सुपल काने हा राजा जो सुपल काने हा. प्रिय भावशीस तेना मन हलका होई गे सांगी दिना એટલે જતા रहना खुटला सांगना. पण एक व्यक्ती प्रिय भावशीस वाजिंत्र बनवणार तेनु गे ते खुटला हेराने तेना वाजिंत्र बनवना जदू ती वाजिंत्र बनवना हा वाजत हा राजा सुपल का नैसा लावते मा. प्रिय मित्र ये लिखेल नाही हा इथे समजवल्यासाठी तुम्ही समजू त्यासाठी. हालेलुया. हालेलुया. तो प्रिय भावशीस चाडी करणार व्यक्ती जो हा दपेट गोटला उघाट कर दे कठोई सांगज आणि ती फिरज पण विश्वासू माणूस दाबी दे. किसाक माणूस दाबी दे प्रिय भाषा एक दूसऱ्याला सांगा तू विश्वासू बनजो कहाँ भी आयोग से तब भूली जाजो दाबी दीजो विश्वासू बनी रहो सांगा सांगा कहीं भी आयोग से तो दाबी दीजो भूली जाजो हाँ भूली जाजो. हाँ जट भला होऊला हवा तट आपला दाबी देवला पी पड दपाडूला पड. प्रिय आणि भावशीस आज आम्ही दुनियाમાં फिरणार व्यक्ती प्रिय आणि भावशीस अमुक बाबत जे हा ती प्रिय आणि भावशीस दाबी देवला तो दाबी देवला पड कोई ना भला होई जाए એટલા માટે તો દેવના વચન એ રીતે सांगा. हालेलुया. हालेलुया. वचन सांग नीति वचन तेना 20 ने 60 कलम ईसा व्यक्ती कुणाला मिळा. हा घणा खरा व्यक्ती जो हा पोताना करेल कामला सांगी दाखव मोय होडाक दान दिदा मोय होडाक भेट करी मोय होडाक ई के मोय तो होडेक लोकशाला बोलवीने खवाडा मोय येसी सेवा करी मा આગળ જાને બિસહા માં સુવાર્તા દેહે
પ્રિય ભાવ છે ઘણા ખરા લોક જે હાથ પોતાના કરેલ કામલા સાંગી દાખવતા મોય મંડળીમાં ખુરશી લીધી હતી મોય ટેબલ લીધી દીધા મોય પંખા લીધી દીધા મોય એ લીધી દીધા ઘણા ખરા વ્યક્તિ સાંગી દાખવતા મોય એ ક્યાં હા પણ વિશ્વાસુ માણસ કોને મળી શકે હાલેલુયા હાલેલુયા વિશ્વાસુ માણસ તો પ્રેમ ભાવ से चुपचाप भेंट करने जाता रहो हालेलुया सांगी दाखवू नाही दुसऱ्याला पण विश्वासू माणूस चुपचाप भेट करने जाता रहा हालेलुया हर देशी तर चुपचाप देजो मला सांगी नको दाखवस दुसऱ्याला बोल आहे नको सांगशी प्रिय मित्र विश्वासू माणूस हा यो कुणाला जाणू मी प्रिय मित्रो हालेलुया समजूला आहे विश्वासू आपले सांगजन एक दुसऱ्याला सांगाडजन ना विश्वासू सांगाडजन आणि प्रेम भावशीस आपले मोठी मोठी गोट लावजन ये तो मुई के महता होता है सांगू पण प्रेम भावशी विश्वासू माणूस सांगेन दाखवा अंदर थी खुशी हो का परमेश्वर माने द्वारा तो काम करना गया दिवस में एक सभा में हता में प्रेम भावशी मैं रीते सांगता हूँ का परमेश्वर ने माने द्वारा देखता घना व्यक्ति बांधी लयल व्यक्तीला साजा करा लखवावाळा व्यक्तीला परमेश्वरनी माने देखता साजा करा घणा व्यक्तीला परमेश्वरनी माने देखता साजा करेला घणी बहनो मंत्र तंत्र विद्या जाणणारी बहनो माने देखता तेही कबूल करा ने परमेश्वरने तेला तेमासून सोडवेला दुष्ट आत्माने बंधन मासून सोडवेला कैंसर टीबी जानलेवा रोग व्यक्ति परमेश्वरने माने देखता सोडवेला मला परमेश्वरने एक उपयोग के पण जो परमेश्वरने काम करेला हालेलुया हालेलुया प्रिय भावसूस माझे सांगा का मुई काम करेला हा तो प्रिय भावसूस देव कठ रहना देव कठ होता हालेलुया हालेलुया એટલા માટે પ્રિયના ભાવસુસ વખાણ પોતાના કરલા નહીં માટે પ્રિયના ભાવસુસ 28મા અધ્યાયની 20મી કલમે રીતે વિશ્વાસુ માણસ આશીર્વાદથી ભરપૂર થશે વિશ્વાસુ રહેશે તો આશીર્વાદથી ભરપૂર હોઈ જશે હાલેલુયા પણ વિશ્વાસુ નહીં રહા તો આશીર્વાદથી ભરપૂર નહીં રહા ભલે નામ વિશ્વાસુ આ પણ કામ વિશ્વાસુ નહીં હોવા તો આશીર્વાદ નહીં ત્યાર પછી પ્રિયને ભાષે ચાકરી કરનાર ચાકર વિશે सांगा પેલા आपले हेरनाव घरमा विश्वासू दूसरा हेरनाव मंत्री खजानजी विश्वासू तीसरा तो खबर आपनार विश्वासू चौथी बाबत जो हा तो चाकर ना काम करनार विश्वासू એટલે પ્રિયને ભાષે વાંચું માથી 24 ને 45 કલમ માથી 24-45 કોઈ કાઢી થઈ જાય લૂક 12 ને 42 ઝડપથી તો જે ચાકરને તેના ધણીએ પોતાના ઘરનાને વખતસર ખાવાનું આપવા સારું પોતાના ઘરનો કારભારી ઠરાવ્યો છે તેવો વિશ્વાસુ તથા બુદ્ધિમાન ચાકર કોણ છે હાલેલુયા પ્રિયના ભાવસુસ ખાવલા ભાણા પીરસનાર ઘરમાં પ્રિયના ભાવસુસ સેવા કરનાર ચાકર જાનું વિશ્વાસુ प्रियना भावसुस आपले तो गरीब लोक आहात प्रियना भावस आपले घरमा चाकर नाही आहात चाकर नाही ना कदाच कुणाने घरमा चाकर हवा बुं बेसहा त्याला हे नेताणमीय त्याला हे प्रियना भावस खावला पेट भरण हुय पण जो व्यक्ती समयसर जो कुटुंब परिवारला खावला देहे तो विश्वासू चाकर प्रियना भावस आपले पण बेनो बेनो हालेलुया बेनो नित्य है खूब आभार प्रिय भावसुस तुमना पती कदव तुम्हाला विश्वासू गणीने आभार मानिल का तुम्ही समयसर भजन व्यवस्था करी दे नीतिवचन 31 अध्याय में लिखेला सदुपयोगी स्त्री कोने मळे प्रिय भाषा अमुक घर में भाईओ रांधीने बहनों से लखावाड़ता ईशाई रहो कारण का अमुक भाईओ बोज मये ना એટલે બહેનો સાલા રાંધીને ખવાડતા હા પણ અમુક ઘરમાં તો બહેનો જ આખા રાંધીને ખવાડતા એટલા માટે સમયસર આપણે ભોજન દીજન તો બાઇબલમાં લીખેલા નીતિવચન 31 અધ્યાયમાં તુના પોસા પણ તુલા આભાર માનતી ને ધન્યવાદ દેતી
અને તુના પતિના જેનો વિશ્વાસ તુવર બિસિલ કા તું સમયસર કામ કરી પ્રિય અનુભાવસુસ બેનો આપણે પોતાના ઘરમાં પતિની આધીનમાં રહીને સેવા કરલા કારણ કે પરમેશ્વરની આપલા માલા નહીં હા तुम्हाला પાછળથી બેનો સાલા બનવેલા હા એટલા માટે પરમેશ્વરની सांगेला હા દેવની જ सांगेला કા તું પતિના આધીનમાં રહીને ચાલુલા એટલા માટે પ્રિય અનુભાવસુસ અમુક बाबत जी हवी जी खोटा काम कर हवा तो त्याला शिकवला पण तेवर धणी पण आपला करला हक नाही हा प्रिय भाषी बायबल पुरवार कर आपले अधिकार नाही चालवला पण प्रिय भाषा प्रेम थी वर्तन करला जेથી કરીને ઘરમાં આપણે એક દુસરાवर વિશ્વાસ અને પ્રેમ જાગે હાલેલુયા અને પ્રિય ભાષી चाकर आपले चाकर नाही हा बेनो तो तुम्ही चाकर नाही आहात पण सहायकारी किसा कहा सहायकारी अमुक समय भाईओ चाकर समजीने सेवा करव जह चाकर समजीने सेवा करव जह आपले प्रिय भाषा पिचार में हेरता बेनो भाइयों सला आंग देते हैं पाय ही धव देते आखांज कर जे आखांज कर जे आखांज कर पण प्रिय भाषा आपले चाकर नहीं पण सहायकारी हेल्पर ना सहाय करनार व्यक्ति पवित्र आत्मा ने जागावर એટલે કે હૃદયમાં રહીને કામ કરનાર હૃદયને ભીતર ઉભા રહેનાર વ્યક્તિ हालेलुया हालेलुया बेनुसवी सभा रहत हाँ प्रिय भावसुस मला सांगશે मग प्रचार करेन हाँ प्रिय भावसुस ही चाकरला पण विश्वास रोहला जे व्यक्ती तुम्ही हाँ जे मालिक ने घर काम करता हस कदाच तुम्ही मंजरे जाता हस तो प्रिय भावसुस वचन ये रीते सांग हम मजूरला ये रीते सांग का मालिक ने डोळाला दिसायसा तूने काम करी देवला मालिक उभा हवा खेतर में हाजर तर ने हवा तरी पण मालिक ने डोळाला दिसायसा काम करी दे हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह के हाँ प्रिय भावसुस આગળ આપણે ચાલો થોડામાં વિશ્વાસ થોડા પરમેશ્વરને દીધા તેમાં વિશ્વાસ રહેશે પરમેશ્વર તુલા વધારે દે હાલેલુયા હાલેલુયા પ્રિય ભાવસુ ಈ સેવકો સાલા પણ લાગુ પડો માથી તેના 25મા અધ્યાય 21મી કલમ અને 23મી કલમ પ્રિય ભાવસુ લુક લખેલી સુવાર્તા 16મા અધ્યાય અને 10મી કલમ 19મા અધ્યાય અને 17મી કલમ ફરીવારમાં सांगेन માથી 25 21 અને 23 લુક 16 10 લુક 19 17 प्रिय भावसु अठ सांगा का थोडाમાં વિશ્વાસુ आपला थोड़ा દીધા એમાં વિશ્વાસ રહેશે તો પરમેશ્વર વધારે દી आर्थिक जीवन में थोड़ाक पैसा आपला परमेश्वर ने दीदा तेमा प्रिय भावसुस हाँ प्रिय भावसुस आपले व्यवस्थित चालवशे तो प्रभु परमेश्वर વધારે दी थोड़े साची बाबत में खर्चा खोटी बाबत में खर्चा रहती प्रिय भावसु दिन चालू ते ज रीते मंडली में पण जे सेवको साला थोड़ाक लोक दिएला परमेश्वर ने साचवला तेना વધારા करला तो વધારા करील तो मोठे संगत पण परमेश्वर दी सका विश्वास रोहला सांग हालेलुया किसा करोला सांग हो विश्वासू आम्हाला सेवकशाला पण सांगा का आपल्याला जी सेवा दिली तेमा आपले विश्वास राहू तो परमेश्वर आपल्याला मोठी सेवा दिली आशीर्वाद नाही पण मोठी सेवा दिली વધારી सकेली सा हालेलुया 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 प्रिय भावसुसा आज मंडली में कुने बूटे बिसनार हता बूटे बिस्ता बिस्ता मागून खुर्शीवर बिसनार हुई गे खुर्शीवर बिस्ता बिस्ता सेवक बनना काही काही काम सोपा त्याला चिसा करता करता सेवक प्रिय काही ना काही ऊंचाईवर परमेश्वर लेत गे आज प्रिय भावसुस माँ पण बूटे बिसनार व्यक्ति हता त्यार पछी ढोलक वाजवा आखे विस्तार में ढोलक वाजवला तीज सेवा माने पासून हती त्यार पछी प्रिय भावसु बाळको मध्ये काम करना में संडे स्कूल चलावना जुवाना मध्ये काम करना प्रिय भावसुस त्यार पछी परमेश्वरनी एक मंडली में काम सोपा मंडली में प्रिय भावसुस एक सेवक तरीके काम करना त्यार पछी हाँ प्रिय भावसुस पास्टर तरीके निमवाना पास्टर तरीके निमवाना त्यार पछी प्रिय भावसुस घणा समय मागून एक प्रिय भावसु रेवरने दीक्षा दीधी आणि ये रीते प्रिय भावसुस परमेश्वर हाँ लयना मागून स्थानिक मंडली करता बाहेर ने सेवा पण परमेश्वरने दीधी प्रिय भावसुस दूर सुधी परमेश्वर ली जाए એટલા માટે પરમેશ્વરના વચન सांग का થોડામાં વિશ્વાસ રહેશે તો વચન सांग તું ઘણામાં તુલા ઠરાવવામાં ये
हालेलुया. आज काय आपल्या शिकवी राहणार विश्वासू काय विश्वासू. आज तो प्रिय भासूस पती पत्नी माज विश्वासघात हुई रहना तो प्रिय भासूस विश्वासू क्या करे आपले सांगायचं. આગળ પ્રયત્ન કૃત્યો 16 અધ્યાય અને 15મી કલમ પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ છેલ્લી આખરી બાબતમાં तुम्हाला तो लांबा विषय हा पण प्रिय भासूस 8 માં પૂરા કલા જયરાના પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ. તેનું તથા તેના ઘરના માણસોનું બાપ્તિસ્મા થયા પછી તેણે કાલાવાલા કરીને કહ્યું કે જો તમે મને પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ ગણાતા હો તો મારે ઘેર આવીને રહો. તેણે અમને આવવાને ઘણો આગ્રહ કર્યો. हालेलुया हालेलुया. यो व्यक्ती प्रिय भासूसी रे ते सांग एक જેલમાં જેલર વ્યક્તિ એ રીતે सांग का तुम्ही અત્યારે માલા વિશ્વાસુ ગણતા હવા तो माने घर ये आणि प्रभु प्रत्ये प्रिय भासूस विश्वासू. हालेलुया हालेलुया. कोण हा आणि प्रिय भासूस कुणाविषयी लिखेला हा हा प्रिय भाषा एक बाय विषय लिखेला बाय विषय हा एक स्त्री विषय लिखेला बाय विषय लिखेला. ત્યાર પછી પ્રિય ભાષ આગળ तुम्ही हेरसे ત્યારે झेलर विषय लिखेला हा पण प्रिय भाषा बाय विषय लिखेला. बेन એ રીતે सांग का मला तुम्ही विश्वासू गणता हवास तो तुम्ही माने घर ये प्रभु पत्रे विश्वासू प्रिय भासूस प्रभु મને પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ ગણતા હો તો મારે ઘેર આવીને રહો. તેણે અમને આવવાનો ઘણો આગ્રહ કર્યો. પ્રિય ભાसूस प्रभु प्रत्ये विश्वासू अठून सुरुवात करा तो बो लांबा विषय विजा पण प्रिय भासूस माहोळा त्याने सांगणार पण प्रभु प्रत्ये विश्वासू बेन પોતાના મનલા માન હતી કે માં દેવમાં વિશ્વાસુ. आज ઘણા લોકો વિશ્વાસઘાત કરનાર વ્યક્તિ વિશ્વાસઘાત કરનાર વ્યક્તિ પણ પ્રિય ભાસુ વિશ્વાસઘાત નહીં કરલા વિશ્વાસુ બની રહેલા અંત સુધી. હાલેલુયા હાલેલુયા. પહેલો કોરિન્થી તેના 4 અધ્યાયની 17મી કલમ सांगा का છેલ્લી આખરી બાબત પ્રિય ભાસુ વિશ્વાસુ સમુદાયલા ख्रिस्ती समुदायाला विश्वास ती शिकवणार व्यक्ती. प्रिय भासूस देवना सेवकोसाला हे सांग ख्रिस्ती समुदायाला विश्वास ती देवना वचन शिकवला. आजकाल प्रिय भासूस देवना वचन एक कलम वाचीने दूर दूर सुधी ली जाज हाडे ने हाँ साउटा ने हाडे ने गोट चालू कर दे ये नहीं पण देवना वचन विश्वास ती ख्रिस्ती समुदायाला शिकवला. हालेलुया हालेलुया. बोला प्रभु येशू मसीह के. आता आपले आखा ऐकिली नाव कोडाक भाऊस मनीस पोताना मनला मानतास का मा पण विश्वास वहा विश्वास वहा नहीं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रिय मित्रों पहला तो कठो विश्वासू घर में पती हा तो पत्नी हारी विश्वास रोला पत्नी हा पति हारी विश्वास रोला बाळको हा ते माता पिता ने साथे विश्वास युग रोला. आज प्रिय भावस बाळको पति पत्नी बेस विश्वास हा पण बाळको विश्वास प्रिय भावस माता पिताना विश्वासला भंग करणार माता पिताना हृदयला तोडी राहणार. पण प्रिय भावस आपले बाळको हा तो ज्યાં સુધી આપલા માતા પિતા જીતા હતા ત્યાં સુધી આપણે બાળક જ જુવાન હોઈ ગયા તો ઈસા નહીં સમજી જાવલા કે માં બાળક નહીં પણ માતા પિતાના નજરમાં તો બાળક જ ના બેન બાળક કા નહીં નહીં ઈસા ની સૌદામાં હા તો હા પાડલા. હાલેલુયા.
માતા પિતાના નજરમાં તો આપણે બાળક જ મોટા હોઈ ગયા તો આપણે માતા પિતા હોઈ ગયા તેના આઈસ બાસ તો નહીં હોઈ જના આઈસ બાસ હા તે જ આઈસ બાસ એટલા માટે માતા પિતાને હારે આપણે વિશ્વાસ યોગ્ય રહુલા પ્રિય મિત્રો એ सांगे आजकाल प्रियने भाषेस माता पिताला खबर नाही हा आईस बास पोसीला वायले गोठवू हो आणि पोसीना गोठवेल वायले उंदा होई जा का नाही उंदा होई जा आईस बासला रडता कर दीजा आणि रडता तोन हेरुला प्रियने भाषेस आजकाल ही चाले राहणार विश्वासघात वधारे चाले राहणार पण घरमा आपले विश्वासू राहुला तहा आपला विश्वासू परमेश्वर गणेल इब्राहिमला परमेश्वर विश्वासू का गण होता तेना अंतकरण परमेश्वर तरफ होता दुसरा नंबर बाबत आपले हेरजन धन मिलकत आहे तेमा विश्वासू राहुला आणि तिसरा नंबर बाबत आपले हेरनाव का खबर देणार विश्वासू चौथा नंबर बाबत आपले हेरनाव का चाकरनी विश्वासू राहुला એટલે ઘરમાં કામ કરનાર વિશ્વાસુ અને વચન सांगा का एक देवना सेवकला सांगा का थोडाમાં विश्वासू રહેશે तुला परमेश्वर घणा देईल અને પ્રિયને ભાસુસ પ્રભુ પ્રત્યે આપણે વિશ્વાસ રહો એ રીતે પરમેશ્વરના વચન એ રીતે सांगा हालेलुया हालेलुया બોલો પ્રભુ યેશુ મસીહ કે એટલા માટે जरा आज आपले देवना वचन वाचनाव का विश्वासू माणसा घट्ट प्रियने भासुस विश्वासू माणसा जन समुदाय माथून घटत जाता पीला आपले हेरजन का विश्वासू माणूस चमकता तेना चेहरा चमकता कारण का पवित्र आत्मा हृदय में काम करता प्रचार ऐकता आणि साथे प्रिय भावसुस आनंद खुशी जाते जीवन में प्रेम वास आनंद भरी जाता कदों में प्रभुला जायने मुलाकात ले चेहरा चमकता पण आज चेहरा उतरता केम हुई गे कारण का हा प्रेम वास अन्याय वधी गे आणि घणा खरना प्रेम ठंडा हुई गे हालेलुया हालेलुया प्रिय અને ભાવસુસ આવો આપણે પ્રાર્થના કરું અને પ્રભુલા सांगू प्रभु માં વિશ્વાસુ આવ का नहीं પોતાના જીવનલા આપણે તપાસું હુરાબા શાખારી અંદાલારાબારિયા થનામાં હાલેલુયા 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 પોતાના જીવનલા તપાસું આપણે કદે ક્ષેત્રમાં આપણે કામ કરવાના જે ક્ષેત્રમાં આપણે કામ કરવાના તે ક્ષેત્રમાં આપણે વિશ્વાસ રહુલા प्रिय मित्रों घर में आपले हाँ पति पत्नी तरीके एक दूसरा हारे विश्वास रोला इब्राहिम तेनी पत्नी सारा एक दूसरावर ते वो विश्वास राखा था माना पति जी सांगेल ती माने प्रिय मित्रों आजकल आपले चढ़ीने बोली रहना विश्वासू जीवन नहीं आपला विश्वास ना माप कोड़ा कहा आपला विश्वास ना माप कोड़ा कहा का जेती करने आपले विश्वासू गणाजन प्रिय मित्रों अब आपले हाथ ऊंचा करो प्रभुला सांगू आपला मुख खोली दे प्रभु विश्वासू गणीने देवतेना राज्य में लेवला वचन सांग का सुपड़ा तेने हाथ में हा सुपड़ा तेने हाथ में हा भूसाला पाखडी टाकूला અને ભૂસા પાખડીને હિસ્તોમાં ટાકાજીલ અને દાના જાનો કોઠારમાં ભરાજીલ તે જ રીતે જો વિશ્વાસુ હા વજનદાર દાના હા પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ હા તો વજનદાર દાના હા દેવ તેના રાજમાં લીલ અને જો કચરા હા घरमा नहीं विश्वासु का मंडली में नहीं विश्वासु का जीवन में कोई विश्वासु नहीं तेला कचरा गणीने परमेश्वर तेला पाखडी टाकेल એટલા માટે યાદ રાખજો प्रिय मित्रों आपले हाथ ऊंचा કરીને પ્રભુલા सांगू काय માં વિશ્વાસ હા કને પોતાના જીવનला આપણે તપાસ કરો પદરના મનલા આપણે તપાસ કરો ઉરાબા શખરી અંદલારબા રબા શખુરી અંદલારબા હાલેલુયા પવિત્ર આત્મા જગ્યામાં હાલન ચાલન કરવાના દેવની હાજરી અઠા દેવની ઉપસ્થિતિ અઠા
હાલેલુયા 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 રાબા શિખનો રીખાબા શાંદાલા રાબારિયા થનાબા હાલેલુયા 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 ઓ સાના રેબે શેખરે અંદાલા રાબારિયા થનાબા પ્રભુ તમારા નામને ધન્યવાદ હો તારા નામને સ્તુતિ હો રાજા પવિત્ર આત્મા આજ અમારા વિશ્વાસને વધાર પ્રભુ અમારા વિશ્વાસને વધાર પવિત્ર આત્મા દરેકને હૃદયમાં કામ કરો દેવતાની હાજરી ઉતરી આવે ઇબ્રાહીમને જેમ વિશ્વાસ ઇબ્રાહીમ અંતકરણથી વિશ્વાસુ હતા એ રીતે મારો ને જીવન હા મંડળીના દરેક સભ્યનું જીવન વિશ્વાસુ બની રહે ઓ શાના હાલેલુયા પ્રભુ તમારી કૃપાને માટે ધન્યવાદ નામને ધન્યવાદ ઈશ્વર